Like सब normally बोलते हैं, in that sense I'm thankful for food and like that. Yep. What are the things in your life that you feel thankful about? Thankful for? Thankful for? I'm thankful for God especially. I have healthy parents. Okay, you're thankful that you have healthy parents. You need to put the word that. I'm अरे thankful यार that I have healthy parents. Okay. Parents. Hmm. Of course, food, education, house. But I want sentences Mm, because it's language practice. okay. Uh, I am thankful for having good relations in my life, my Very, friends. very nice. Good Very evening, good. sir. Hello, good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. You know what, Aisha? I got very nervous yesterday. When I noticed that you were gone, I thought, especially after the class was over, I thought your cousin was sitting there, right? Did I say something silly that he felt like, oh, okay? Sometimes we just do some silly stuff. We do say some silly things. And when you are all by yourself, it's different. But when you have a male guardian sitting next to you, sometimes it can be a little bit embarrassing. I accept that because it's a language class and the kind of students I have and the kind of personality I have, it sometimes happens. And I Good don't evening. feel very embarrassed about it. Sabaji, good evening. How's your mom? My mom, my mom is always ill, sir. Always ill. Okay. She And is. today is Friday, so I have completed all my work before the class. Oh, lovely. And your mom is bedridden or something like No, this. sir. She has arthritis. Arthritis, a big Yes, problem, sir. She especially in the didn't. winter. She Good doesn't. evening. Hey, Imrana, good to see you. Sanjeev Babu, it has been such a long Yes, time sir. since we saw your lovely face. Sanjeev Babu, Yes, sir. when will you show ye chand se roshan chehra? Please, don't do this. Tell me last time when you turned your camera on, Sanjeev. 2 days ago, sir. Nah, you're lying. I don't remember. Yeah, Yeah? Was your camera on? you can check. You can check the Recording. recording, sir. Yeah. Oh my God, I have got in trouble. I need to stop this recording thing. People will catch me. Anything I want to say, go watch the recording. Link, please. Why? Okay. Why? Guys, how do you join? You don't want the link. You don't ask me for the link. Good to see you, Sanjeev. Yeah. Yeah. And why do some people need the link? I mean, do you save it somewhere? How do you join? Tell me. Yeah, we had saved it, or we can use it from the group. It's there. Okay. In the link section. You go to the link section and you can Yes. find it. Oh, okay. Got it. All Hi, right. sir. Hey, Arish. How are you going, sir? Until you asked me, I was fine. So now you are going in travel. I don't know. What do you think? I didn't say that. The way you said until you asked me, I was going fine. I am worried I- now. did I say that you're asking me made me not fine? No, no. Means I felt that way, sir. Yeah, because that sentence meant exactly that. Hmm. Yeah, that sentence a bit was a bit not good, sir, for me. Arey, yeah. I was just joking. This guy has no sense of humor. Arish, start living with real people. Hmm? I'm living with real people, sir. I don't think so. Then why don't you have a sense of humor? Why don't you I understand do when have. somebody's laughing and somebody's trying to make you smile? You said it that felt bad. Yes, sir. I know. How old are you, Arish? 19. In January, I'm going to be 20.
Gonna be 20 in January. Okay. Hmm. So, people, what are we going to study today? I think we have already started Unit 6 and we are going to continue. Yep. Oh, okay. Okay. I was Okay. evening, searching sir. We for have the to audio discuss file, sir. homework. I remember. You guys have a writing to talk homework, So let's listen to you guys one by And one. that audio one. Yes, the audio as well. So first of all, I would like to listen to you people about your dreams for the future. Go ahead. Who will start? Kushi, do you want to start? Good evening. I'm Yeah, very no welcome. problem. Who will start? Rukaiya, will you start? No, sir. No. Okay, maybe I should invite a new person to start, because nobody in my class will start. So I need to invite a guest, to start. Okay, I know who will start. Aisha will start. No, I thought you were waiting to be called. I thought you were just waiting to be invited. I looked at your expression. I think I misunderstood. You were saying, not me, not me, not me. But I thought you were saying, just call me, call me, call me. So yeah, happens sometimes, what do you call it? Non-verbal communication can be a little bit confusing sometimes, you can misunderstand. So anybody here who's willing to speak first? Tani? Your dreams for the future? Let me start. Yeah, okay, good. Good that you decided. Okay. So, can I read from my notebook? Hmm? Can I read from my notebook, Yeah, or are you it going is, to it is, share? it is, it is, it is. Sir, I That's have it. sent you my note. Please start. You can look at your notes. You can look at your text. Oh, okay. So, hello everyone. My name is Khushi and I'm 20 years old. At the moment, I'm in my second year of engineering and I often dream about my future. I have big plans and I would like to tell you a bit about them. My most immediate plans are preparing for my college exams. I'm going to study hard this weekend. I haven't prepared yet, but I know I will. Sir, when I am reading my sentence, I missed many words like a. So it will be a mistake. So I should repeat that, or I just be continuing that. Well, actually, so far I haven't noticed that, but if you have actually left them out, then it is embarrassing for me that I didn't notice because I personally didn't notice, So But yeah. I know that. Okay, let's do one thing. We it is on the record, so why don't you read all over it, from the beginning, okay? All Mhm. over. Read all over, okay? Once Again. again, from the beginning. Okay, fine. From hello everyone again. Hello everyone. My name is Kushi. You have muted yourself by mistake. I was saying. Mm-hmm. Okay. Hello everyone. My name is Kushi. I'm 20-year old. At the moment, I'm in my second year at engineering school. I often dream about my future. I have big plans, and I would like to tell you a bit about them. My most immediate plans are preparing for my college exam. I'm go- You have muted yourself again. Oh, Mm-hmm. I think I did not have. I haven't prepared yet, but I know I will. When exams end, I'm going to work on my other skills and my health too. I need to be disciplined at my work to get good internship at the end of my second year.
I'm still not sure if I will go for MBA or MTech, so I'm going to work for both exams. It's difficult because I'm interested in path. If I choose MBA, I would like to work in my own startup. In 5 or 10 year time, I would like to have a stable career and of course great package and I want good health. Of course, one day at my postgraduate, not now. I hope I will go for a relationship because um before I'm 30, I want to to marry and have a stable life. That's it. Okay, well done. Yeah, there were a few mistakes, but not anything too big. And I'm not gonna interrupt anybody speaking. Okay, so yeah, I listened to you more Please carefully. address me. What's the mistake? Don't worry, don't worry. It's on the record, so we can do it later as well. Don't worry. Okay. Next, Okay. I'm not gonna interrupt anybody. Okay, and you will share your text as well in the group so that we can talk about the problems later, maybe today, later, or maybe another day. But yeah, go ahead, guys. Who's the second person? Sunita. Do you want to speak, Sunita? Sir, was it homework? Yeah, ma'am, it was. Good news for you. Okay. Actually, sir, I was absent in this class since long time, sir, So because I didn't get time. I have Some some rules here. I have some rules. I would like to just update you on them. You know, the thing is, if you miss the class, it's all right because life is busy. Sometimes people don't have time to attend the classes. All my students are not 16, 17-year-old students who have nothing else to do. Some of my students are in full-time jobs as well. So I understand that. Some of them have household responsibilities. So I'm okay with that. I know sometimes you just can't make it to the class. But whenever that happens, I have ensured that you don't really feel that you missed the class. You can still study with the recording. And it takes me some time, but I sit here after the class is over instead of going downstairs and upload the video on YouTube for you guys. So I will appreciate if you do watch the recording, especially when you miss the class. Okay. yes, sir, but Some students watch the recording for revision, for more. I will say re-strengthening their understanding. Reconsolidate their understanding. But those who miss the class, they must watch the recording. It is really necessary because when you come without watching the class, recording, because our class is in continuation, we don't start a new topic every day. So you will not be very comfortable sometimes when you do not know what's going on, So yeah, that's yes, my, sir. yeah. Yes, sir, but my problem is some error is going on production, sir. So I have to join at night around 7 or 2 as well. That's why I don't get time to watch recording as well, sir. I I understand. I don't even cooking food at home, sir. I'm not Since even, 2 or not even, 3. I'm not even, or I haven't been cooking. I haven't been cooking, or I'm okay. I haven't been, not don't. Okay, okay, sir. Don't is habit, not is Okay, sir. But today is Friday, tomorrow or it's the weekend. Sunday is off. So I will watch, sir, all video. Okay, Kalpana. I will try to watch, sir. Chef, definitely. Okay, sir. Thank you. So who's the next person? Yes, Sunita. Sunita. Guys, do we have a song with Sunita? No? Okay. Then. Sunita misses something. Yes, sir. Sir, I'm I actually voice. Sir, here is noise pollution, sir. Give me just 5 minutes and I will come back. I have a doubt she's writing her number. Okay. Let's see. Who's the next person? Sam Bahadur.
wanna be the next person? Okay, sir. I'll try. Thank you. Thank you. Thank you for agreeing. Yeah. Hello, everyone. My name is Sambhavi, Sam for short. I am 70-year-old. After 2 months, I'm going to be 18. Now I am study Chinese and yeah, sorry, Yeah, sir. take it easy. Take it easy. No worries. You're a learner. Mistakes are natural. Okay, don't worry. Now I'm study diploma in Chinese. I I don't have big plans for my life. Just a few years I have. So my plan is to going here. I'm going to study in Taiwan next year, where I'll be complete my bachelor's. My When I return, I need. Sorry, sir. I didn't. What's going on? Have you written it, Sambhavi? No, sir. Ah, that I cannot condone. Faltering, I totally understand. But if you ever think, or anybody ever thinks, that without putting in your best efforts, you will get the best results, you are fooling yourself. Next person. Sir, Yes. I'm want to continue. How? When I wrote some notes. Okay. When I complete my bachelor's, I want to visit Japan and other places for in 10 years time. In my future, I want to start a business or doing a good paying job. After I'm 40 or I'm about to be 40, I want a stable life, having a good family and a good job. Okay. That's also. All right, Sam. Thank you. Who's next? Who's next? Anybody? Anybody can come in. This is the second time you guys are doing it. So, sir, can I? Yes, Rukaiya. So, hello everyone. My name is Rukaiya. I am 17 years old. And I am going to be 18 soon. At the moment, I am doing bachelor in radiology. I have lots of plan for my future. Let me tell you a bit about them. By the end of this, I will be perfect in some basic medical skills like checking heart rate with a stethoscope and stuff like this. And I am going to enjoy it so much. Perhaps by the end of the next year, I will visit Sikkim. And I don't have any other plans for the next year except studying whole year and going home on holidays. That's all. In 5 years' time, I will be a radiologist and I will start to earn money. Well, after 1 or 2 years, my brother and I will buy a plot of land, and we will have our own house. In 10 years' times, maybe I will move to abroad for a job because it's also my dream to work or live in abroad. I will fulfill this dream at any cost. I will take my mom to Saudi, and then we will visit some countries, and then I will marry a frictional man. That's all. Just one thing, I'm not sure if my plans will happen the same way as I am thinking, because anything can happen at any time. I wish everything happens the same as I am thinking. Touch wood. Oh, Rukaiya, mind blowing. Well done. Okay. I'm very happy. And what did you say about marriage? I will marry a frictional man. You'll marry a fisherman. Fiction, yes, sir. Fiction man. Frictional. Fictional character. Fictional character, sir.
She will marry a fictional person, fictional character. Okay, for example, Superman. So great, Rukaiya. That was very interesting. Okay, so 4.5 billion people are useless for Rukaiya. All right, fine. It was really nice, Rukaiya, though. The comfort was clearly visible that you feel. Now, again, there are a lot of rough edges that need to be, smoothened, and that's what we are here for. Keep working hard, Rukaiya, because I'm telling Yes, you, sir. I alone can do nothing for anybody. But if you guys cooperate with me, if you just follow my advice and work sincerely, you will have no regrets, I can tell you, for being with me, for spending time in the class. Okay? Okay, sir. Who's the next person? Is that enough motivation, Aisha? One 17-year-old girl, another 17-year-old girl now. Hello everyone, with myself Aisha and I am 17-year-old. I always wonder what my future will be. When I was a kid, I always dreamed of being a doctor. I want to help other people around me. Seeing them happy makes me happy too. I have another dream that I want to achieve in my life. I want to try everything that I want. Even if I fail to achieve it, I believe I still have another chance and make another dream come true. First of all, I have just completed my 12th and I am preparing for the entrance exam to get into an engineering college. And I want to pursue a BTech degree in computer science. As for now, I am focusing on my studies. I do have a future plan for my family, but before that, I would like to travel and explore the world. I understand to achieve anything requires faith, hard work, determination, dedication, and believe in yourself. With hard work, dream, and achievers. Wow. Well done, Aisha. Good job. And everybody will share their text in the group so that I can give them feedback on the correction side. Okay. Because you want to improve your language. So very nice. Good to hear that, Aisha. And I like the way you're thinking that everything is possible. Yes. I was expecting you would mention your cousin here in your text. He would have felt happy. Have you written about him but chose to maybe edit it out? So it's a short note. Uh-huh. Why didn't you write the whole thing? You had 24 hours. Didn't find enough motivation to do it? Everybody should bring a crush to the class, maybe, so that they feel like, more motivated to do better in front of them, to impress them. Now, there is nothing else that I can think of. I'm being desperate, I know, but I think this is the only way I think you guys will feel motivated now. Okay. Who else? Imrana? Are you ready? Well, it was good, Aisha. Yeah, Imrana? No, sir, I don't want to share my dream Okay. because I Simran. have very big plans and I struggle a lot. I have complete my one dream and I struggle a lot. That's why I don't want to share my dreams. Imrana, I want to say Yeah. something in a personal capacity, not just as a teacher. Look, life is never a bed of roses. At the cost of sounding cliched, I'm saying this. There are struggles, okay? But you have to look at the upside. You have to look at the upside. And in case if you start to feel that some of your decisions are not really helping you, then you need to start introspection, okay? Because eventually we all have to live with the consequences of our actions, our decisions, okay? At least we are making our own decisions. There are a lot of people who don't make their own decisions, okay? So I don't know, I will say even failure is good, if that failure came with some learning. I hope you understand what I mean. So always be positive, maintain a positive outlook thinking, and don't become pessimistic, okay? Not at all. Next. Who's the next person?
Sanjeev, Simran, Vikas, Zafri, Sabaji. Harish has already surrendered. Tani, Sunita. Have you done your homework, Sunita? Everybody else mute yourselves. Yeah. Sorry, sir. Yes, Sunita, are you ready What, sir? to attend my second wedding? No, sir. Actually, I think we are discussing our future plan. You asked me, so I said, thought, nah, because everybody knows. Nobody's gonna ask this question. What? They might say, sorry, I've not done my homework, but they know what we are doing. You are the only one who said what. So I thought, okay, this is the only way I could tell you what we are doing here. Students are telling their future plan, so I thought that we are going to discuss. It was decided yesterday, Sunita. And Sunita, you sent me a message. You deleted it. I asked you, what did you delete? 24 hours passed. You didn't reply. When I asked, why didn't you reply? You said, what do I reply? What does that mean? By mistake, I sent you. That was the reply. That was the reply that you are giving me now. That, sir, I may send something by mistake, which I deleted. That's all. Documents that I wanted to send with another person, but by mistake, I have sent you. अरे So, भाई, ये लड़की को अगर किसी yes, ने sir. कहा है कि लड़कियों का दिमाग आधा होता है, तो तुम साबित कर रही हो कि वो सही बोला है। ठीक है, पक्का बता सकते हैं। भाई, मैं क्या बोलूं, जाने दो। अरे भाई, ये लिख सकती थी ना तुम। जब मैंने पूछा, यू डिडंट रिप्लाई, देन यू शुड हैव रिटन ना कि सर, इट वाज ए मिस्टेक, आई वांटेड टू सेंड समथिंग टू समबडी एल्स, बट यू रोट what do I reply? I've already asked you a question. What did you delete? Yeah. Sunita, you are a character, and I don't know. Okay. Guys, who's next? Manisha. What are your future plans, Manisha? I know some people don't feel Sir, very... I am hiding because fear of homework. You're hiding because you haven't done your homework. Okay. Yeah. Sabaji, have you done your homework? Because you watched the recording, I think. I don't know. Sir, unfortunately, I watched the recording middle of class. But Okay. I will try. Hello, everyone. My name is Saba. And as I grow older, I don't have more plan. But one plan, I want to make all three of my sons a good human beings. And second of my future plan is I want to settle in Patna with my family, because I don't want to live without my family, my children. I always miss them. Sir, I'm doing lots of struggle of my life without my husband and my children. We understand, Sabaji. All right. You are now, you have job in Patna. Yes, sir, I want to. Yeah. You are living there, don't you? You're No, not living sir, there? I live in Chhapra. But your job is in Patna. No, sir. My job is Chhabra, and my husband and my children are lived there, Patna. Oh, Live in I see. Patna. Oh, okay. Oh, so I thought your new job was in Patna. That's what I thought. No, sir. It's also in Chhapra. Yes. So what is stopping you? You have to just apply, send an application to the government that your family Yes, members sir. are there. I have already applied, and let's see, maybe in January, my transfer is will Yeah, succeed. okay. So just wait for the good times, okay? Yes, sir. Cheerful. After 17 years. After 17 years? Yes, sir. For 17 years, they have been living away from you. Yes, sir. Wow.
I don't know what to say. Best of luck, Subhaji. Next, Simran, Zafri, anybody? Vikas, Sunita. Sunita, have you written your answers, your text? My plans for the future. Sir, I didn't do my homework, but still I can tell you about my future plan. Sure, go ahead. Sir, anything we can say, like it can be long term and I will on. Okay, perhaps it's relax. Just a second. I thought that you guys would be excited about this. Some people love speaking about themselves, but you guys are clearly not some of those people. See here, this was the topic. एंड जैसा मैंने बताया कि आप मिस बोल बच्चन मैं आपका नाम रखने वाला हूँ, रख चुका हूँ लगभग सुनीता, क्योंकि आप प्रोमिसेस करती हैं, भगवान भला करे, एक टीचर के साथ ये कर रही हैं, बाकी के साथ क्या करेंगे, इतनी प्रोमिसेस तोड़ती हैं आप, लुक, यू सेड यू वुड वॉच द रिकॉर्डिंग, आपने इतनी अच्छे मैसेज किया मुझे लास्ट टाइम ना, आई थॉट मैंने हार्ट दिया था आपके मैसेज को, राइट? आई गेव अ हार्ट मैसेज। ये देख लो आप, पहले ये देख लो इधर। Okay, next year, in 5 years time, 10 years time, when you are 40 or 50. Okay, this is this person's future plan. Now your future plan, please. Go on, Sunita. Sir, I didn't read this. It's okay. Another day, tomorrow maybe, okay? Come well prepared. All those people who haven't done their homework, please do it properly. And I would like you guys to read your text tomorrow in the class. And those who have already done it, those who did it today, share your text in the group so that I can give you feedback on your language errors. Now, yesterday, we started this interesting unit, which I am very excited about, the present perfect and the past simple. So we What can about start audio? Which unit and which page number? Sabhaji, it is page number Is it main book, sir? 60. Of course, the color book is the main book. And yeah. And Sunita, what did you ask? 6.1. Sir, I was asking about audio questions. Which one, Vita? Oh, that practice, Kushi. Yeah. Okay. This year. Did Mark Zuckerberg invent Facebook? Are we ready, guys? Are we ready to respond? How many people are prepared? Okay, Kushi, you go ahead. Did Mark Zuckerberg invent Facebook? Definitely. It was in 2003 in Harvard University, but 3 other students helped him do it. Good. Everybody, I invite you all. Okay, respond. Was David Bowie American? No, No. I don't think so. I don't I think don't so. think He so. died in America. He died in No. America. He's an Englishman. I think he is. When you're responding, your eyes should be on camera, not on your notebook. You are not allowed to write it down. I asked you to learn it by heart. कुछ इंस्ट्रक्शंस का वैल्यू है या नहीं है दोस्तों, पहले ये बता दो मुझे गाइस, इंस्ट्रक्शंस का कुछ वैल्यू होता है या नहीं? मैंने क्या कहा था, राइट डाउन द ऑडियो स्क्रिप्ट, और आई सेड लर्न द कन्वर्सेशन बाय हार्ट. व्हाट डिड आई आस्क यू? Learn the Tani is conversation. looking at the audio script and reading it. Sir, I didn't write, sir. देखो, be honest Tani, come on Tani. Okay, ठीक है, okay, fine. Look at the camera. Okay. Was Sherlock Holmes a real person?
No, 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 no. Absolutely not. Absolutely not. Let Tani respond. Yes, Tani. Yeah. No, absolutely not. आगे Is she नीचे is क्यों देख not रही हो? हाँ, नीचे मत देखो, सामने देखो. ओके. डरा रहे हैं. दे अरे मतलब क्या? I'm scaring her. In what way? हाँ, go on, Tani. I forgot. Look, Tani, I really wanted you to learn these things by heart. Okay, एकदम trust करना था अपने आप को. Khushi said, "Sir, 20 मिनट में हो जाएगा." Okay, I said that's really good confidence. Yeah, you should have that confidence. Memory plays a very important role. Those people who are clever, they usually have a good memory. Okay, so if you're struggling to remember something, maybe there are two reasons. Okay, one, you don't understand what you're trying to learn, what you're trying to memorize, what you're trying to learn, or maybe simply you just have a very bad memory. I don't know. But मुझे चाहिए था एकदम confidently dialogue deliver करना था भाई. Why didn't I ask you to write down the audio script? Because here intonation plays a role, and you can only do it when you know what you're reading. Okay, you should know it properly. तो खैर never mind. अब एक option देता हूँ सब लोग को, write down the audio script. अब कोई option नहीं बचा because you guys have made me send that. तो fine. That's great. All those who did it, congratulations. Well done. You recorded and sent it to me. Or the audio script you sent it. Okay, audio script. Okay, never mind. So, in famous footsteps, you understand? Famous footsteps. If you are, okay, in famous footsteps, you're following your father's footsteps. It means you're doing exactly what your father did. Okay, you're following your father's footsteps. Look at the photographs. How are the people related? We did this yesterday. We also did exercise 2. There are some sentences, and we decided who these sentences were about. So I'm gonna play 6.1, and somebody's mic is a bit noisy, so I would appreciate if you could mute. Good evening, sir. Hello, Jishan. Sorry, sir. I was busy. That's why I late joined. 6.1. Famous people. 1. John Lennon wrote the famous song Imagine. 2. Prince Harry has been patron of the Halo Trust since 2013. 3. Steve Irwin always wore a khaki shirt and shorts. 4. Bindi Irwin has sung with the Crockmen and the Jungle Girls. 5. Princess Diana married Prince Charles in 1981. 6. Julian Lennon has written a children's book. So in these sentences, if you notice, some are in the past simple and some are in the present perfect. And I think everybody here at least recognizes the tenses very well. The first one is the past simple, everyone. The second is the present perfect. The third is the past simple. The fourth is the present perfect. And the fifth is the past simple. And the sixth is the present perfect. As you can see, in the past simple, we use the second form of the verb wrote, wore, married. And in the present perfect, we use two verbs, has or have, plus the third form, has been, has sung, has written. In number 6, the verb is write, which is used in the third form, has written. In number 4, the verb is sing, which has been used in the third form, has sung. Can you tell me the verb in number 2? Be verb. Yes, and those who couldn't, it means your concept is still not clear. The verb is be, and it has been used in the third form, been. In the present perfect, has been. Been is the third form of be verb.
Let me give you a sentence. I teach. I have taught for 17 years. I teach. I teach English. I have taught English for 17 years. I have taught. The third form. I have taught English for 17 years. I live in Bihar Sharif. I have lived in Bihar Sharif since my childhood. I live in Bihar Sharif. I have lived in Bihar Sharif since my childhood. Follow the patterns, everybody with full focus. कुछ बोल रहे हैं, क्या दिमाग सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, गौर करो. हिंदी में कुछ क्या बोल रहे होंगे हम. I teach. I have taught since 2007. Okay, हिंदी में क्या बोले हम? 2007 से पढ़ा रहे हैं एक तरह से, राइट? मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बोला आई हैव टॉट. आई लिव इन बिहार शरीफ. आई हैव लिव्ड इन बिहार शरीफ सिंस चाइल्डहुड. ओके, बचपन से रहे यहाँ. नाउ लिसन टू दिस. आई नो तानी. आई हैव नोन तानी फॉर 25 years. 20. Okay, all right. I have known Tani for 20 years, 20 years, I would say. No, not even 20. 15 years, 15, 17 years, 17, 18 years, yeah. Or maybe a little more. Yeah. I've known Tani. नहीं बोल सकते. Yeah, no, before that actually. She was only a 10, 12-year, 14-year-old girl. She went to buy milk, and I went to buy milk from the same person, and she used to stand there and look at me in a funny way, as if I was an alien or something. Tani, do you remember that? I don't know, sir. You don't know. She looked at me as if I was an alien. But she was very funny. I She think laughed. Yes, Tani. you drank milk that time. Okay, that's That's why you why. looked at me that Yeah. way. I used to drink milk, fresh from the cow without heating it up, I used to go to the gym those days. That's why. Okay. Without So boiling and you drank. yeah, That's yeah. why For some people it is a little disgusting, that you drink milk that way. So they look at you like, how can you do that? Okay, now it explains, Tani. Thank you for explaining. I always wondered why she looked at me that way. Now I understand. Yeah. She laughed with the person who sold the milk, she made jokes with him, but she would never talk to me. She would only, okay. All right. Next. So what? Yes. सारे sentences में मैंने verb 3 use करा ना. I have taught, I have lived, I have known. अब सुनो. I am a teacher. I am a verb क्या है? Be verb. तो जी present perfect में इसका third form चाहिए कि नहीं चाहिए? I have been a teacher for 17 years. I have been a teacher for 17 years. ये मामला सेट हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज करना है, और किस लिए यूज करना वो गौर करो. पर्पस क्या है यहाँ पे? इन जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले, इसमें कोई बात पास्ट से शुरू हुआ और अब तक चला. जैसे मैंने कहा आई हैव नोन तानी फॉर 15 years, 17 years, okay, maybe 18 years, okay. तो ये आई हैव नोन, तो 18 साल पहले जानना शुरू किया, अभी भी जानता हूं उसको. आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 17 years, 17 साल पहले पढ़ाना शुरू किया, अभी भी पढ़ा रहा हूँ. आई हैव लिव्ड इन बिहार शरीफ सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन में रहना शुरू किया, अभी भी रह रहा हूँ. तो एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट. स्टार्ट हुआ पास्ट में और अभी भी चल रहा है, अभी तक प्रेजेंट तक आ गया है. तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बोल सकते हैं. ठीक. जैसे एक और आखिरी देके जाता हूं. आई हैव ए टॉय गन. आई हैव अ, मेरे पास एक खिलौना वाला बंदूक है, खिलौना. मेरे पास है. आई हैव ए टॉय गन. मेरे पास ये बचपन से है, यानी कि पहली बार बचपन में आया, अब तक है.
तो प्रेजेंट परफेक्ट में बोलने के लिए ध्यान देना सारे लोग। मैंने पहले ही कहा आई हैव अ टॉय गन, इसमें वर्ब हैव है, तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? हैव का थर्ड फॉर्म इज हैड, तो कैसे बोलना पड़ेगा? आई हैव हैड दिस गन since I was 6. Since I was 6. कुछ समझ में आया दोस्तों? नहीं आया मैं दोहरा दूंगा, लेकिन पैटर्न वही जो पीछे किया वही कर रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं। सारे सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आई हैव बोला था ना, सब में आई हैव आई हैव आई हैव, फिर आया था ना थर्ड फॉर्म, यानी हैव में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट बोलना आई हैव बोलना पड़ता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो वर्ब बोलना चाह रहे, मैंने कहा मैं 17 साल से पढ़ा, आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 17 years. आई हैव लिव्ड इन बिहार शरीफ सिंस माई चाइल्डहुड। और मैंने कहा 6 साल की उम्र में मुझे वो खिलौना मिला, तब से अभी तक है मेरे पास। ये आइडिया मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। ओके, तो आई विल से, पहले मैंने बताया आई हैव अ टॉय गन, मेरे पास एक टॉय गन है। आई हैव अ टॉय गन, कोई टेंशन नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट सिंपल है। आई हैव अ टॉय गन, आई हैव अ सिस्टर, I have a toy gun. I have a car. I have a toy gun. Okay. ये एक टॉय गन 6 साल की उम्र से है मेरे पास। I have had this toy gun since I was 6. Since I was 6. सारे लोग फॉलो कर पाए? I've had this toy gun since I was 6. ये एक फंक्शन समझ में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट एवरीबॉडी? इजी। तो आप अपने कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताएं जो पास्ट में शुरू हुआ अब तक चल रहा है। पहले हिंदी में बता दें, फिर इंग्लिश में बताना, क्योंकि अगर हिंदी में समझ नहीं आई बात, इंग्लिश का कुछ नहीं होना है। पहले हिंदी में बात बताना। आई वॉन्ट योर एग्जाम्पल इन हिंदी। मेरे पास ये लैपटॉप फरवरी से है, बहुत दिस बढ़िया ईयर खुशी, फरवरी। बहुत बढ़िया। आई लाइक दिस अबाउट यू, बहुत आसानी से सीख जाते हो आप। वो एग्जाम्पल दो इन I इंग्लिश। have had this laptop since February. फैंटास्टिक, वेल डन। आप मैंने मैं डिनर कर लिया है। आई हैव हैड डिनर। कल्पना, आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी, सुनी होती तो ये एग्जाम्पल नहीं देती। हाँ, बीच रास्ते में जब मैं बोल रहा था, इनके दिमाग में कोई बात आई होगी कि ये तो मुझे पता है, बस वहीं पर इन्होंने छोड़ दिया मुझे सुनना। रिजल्ट, आई हैव हैड डिनर। समझ में आई बात? उनको लगा उन्होंने सही एग्जाम्पल दिया। हम लोग जो बात कर रहे थे कोई इसका कनेक्शन ही नहीं है। ये अक्सर होता है, मैं बताऊं, यहाँ पर मैं 3-4 स्टूडेंट्स के बारे में बहुत नर्वस हूँ कि वो गलतियां करने वाले हैं। एक पास कर गई है, खुशी, बिकॉज शी ज्वाइन नाउ, शी वाज नॉट विद अस एट द एलिमेंट्री। ठीक है, वो पास करके उसने पकड़ लिया कि ये लैपटॉप मेरे पास फरवरी से। मैंने बताया, वो टॉय गन की कहानी सुनाई, उसको याद रह गया, है ना। बाकी कौन लोग हैं जो टॉय गन की कहानी नहीं समझ पाए? या मैंने बताया 17 साल पहले मैंने शुरू किया था पढ़ाना, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा कि 6 साल पहले, सॉरी 18 साल पहले मैंने तानी को पहली बार देखा, जाना मैंने कि हाँ तानी मेरी पड़ोस में रहती है, अभी भी जानता हूँ रहती है। ठीक है, तो आई हैव नोन तानी फॉर ऑलमोस्ट 18 years. ओके, तो I've had my bike since 2000. So can we say I have मैंने had पहले a मैंने पहले ही कह दिया है कि आपको हिंदी बोलनी होगी। खुशी ने हिंदी बोल दी थी कि मेरे पास ये लैपटॉप 25 फरवरी से है, राइट। तो अगर मैं बताऊं, मैं इतना ही कह सकता हूँ, थैंक यू खुशी, बिकॉज आपने ये बात तो हाईलाइट करा है कि अगर आदमी गौर से सुने तो चीजें समझ सकता है। ठीक है, चाहे पहली बार ही क्यों नहीं सुन रहा हो, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली वही सेंटेंस बोल दिया उसने, टॉयगन की जगह लैपटॉप डाल दिया। बस बस सिर्फ इतनी सी है। पहले मैंने कहा आपको अपनी बात बोलनी होगी हिंदी में, हिंदी में बता दो। मेरे पास ये ड्रेस 3 सालों से है। आई बहुत हैव हैड दिस ड्रेस सिंस 3 years. फॉर 3 years मैम, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। Also, इट्स नॉट अ बिग मिस्टेक, इट्स नॉट अ बिग मिस्टेक। ओके, okay, sir. गुड। हाँ, बहुत अच्छे ताहिद। सिंस आई वाज इन क्लास 10th और सिंस 2010, जो भी आप बोलना चाहें, एंड 10 21, सिंस 2021। ओके, ठीक है। हिंदी में अगर आप बता सकते हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है, जैसे मैंने कहा खुशी, आपने बहुत आसान कर दिया मेरे लिए, यू मेड माय लाइफ इजी। नहीं तो कई बार चीजें पलट जाती हैं। ठीक है, इंसान अगर गौर से सुने तो वो बिल्कुल सीख सकता है।
अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे सुनना या ध्यान नहीं दोगे, उसके बाद आप कहोगे मैं तो बोल देने वाला हूँ सेंटेंस, तो फिर ये टाइम वेस्ट करते हैं आप अपना भी और सारे क्लास का भी। इस बात का ध्यान रखें आप सब, ठीक है? जो बात बताई जा रही है उसको उतने गौर से सुनना है जितना बाकी सुन रहे हैं। आपके ओवर कॉन्फिडेंस का खामियाजा सब नहीं भुगत सकते, प्लीज रिमेंबर दैट। गो अहेड, एग्जाम्पल्स इन हिंदी फर्स्ट एंड देन इन इंग्लिश। मैंने जितनी बातें बोली हैं आपके जहन में है? I've had my bike since 2000. वेरी गुड। मैंने बिहार शरीफ वाली बात बोली थी, मैं बिहार शरीफ में रह रहा हूँ बचपन से। मैंने कहा रहना शुरू हुआ बचपन में, अभी तक रह रहे हैं। आई हैव लिव्ड इन बिहार शरीफ सिंस माई चाइल्डहुड। अभी रवि तुम्हारे भी तो पास है सेंटेंस, दिल्ली वाला सेंटेंस। सुनीता तुम्हारे पास भी तो था दिल्ली वाला सेंटेंस, लेकिन तुमने तो वो बोला नहीं। सबसे पहले तो वही। मेरे पास 2014 से एक बाइक है। बहुत अच्छा, आई हैव हैड अ बाइक सिंस 2014। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। मैं पुणे में 2022 से रहती हूँ। आई बहुत हैव बढ़िया। हैड I have lived. आई हैव लिव्ड इन पुणे 2022। I have lived in Pune since 2022. बहुत अच्छे कल्पना, आपने सुना, गौर से सीख गई। गौर से सुनेंगे आप सीख जाएंगे। मैं That जब time I 2000 was having dinners. सैम, मैं 2023 से चाइनीज सीख रही हूँ। आई हैव लर्न चाइनीज सिंस 2023। वेरी गुड सैम बहादुर, वेरी गुड। आपने गलती करी, आपने एक मौका छोड़ा। जब मैंने आपको आज सैम बहादुर बोला था, आप टेक्स्ट में चाहती तो ऐसे शुरू करती, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मस्ती कौन ज्यादा करता है, एक रिक्शा चलाने वाला या इंजीनियर और डॉक्टर? पहले बताइए। मैं बताऊं, इंजीनियर डॉक्टर्स बहुत मस्ती करते हैं, अगर आपको जरा डाउट है तो जरा जाकर देखिए। यस, उनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, लेकिन वो मस्ती बहुत करते हैं, ठीक है? और रिक्शा वाले को मस्ती कभी नसीब नहीं होगी, क्योंकि उसने पहले मेहनत तो करी उतना। तो अगर आप थोड़ा मेहनत कर लें पढ़ाई में, तो फिर क्लास आपके लिए मस्ती की जगह है। ट्रस्ट करिए मेरी बात का। ये स्ट्रेसफुल जगह होगी जब आप प्रिपेयर्ड होकर नहीं आओगे। जब आपने सैम शुरू किया था तो आप बोलती माय नेम इज शांभवी बट सैम बहादुर फॉर माय टीचर। कितना मस्त हो जाता है। इसको कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। उसी समय कनेक्ट कर देना। मैंने बोला था उसके जस्ट पहले, तो वो चाहती थी उसको कनेक्ट कर सकती थी, राइट? माय नेम इज शांभवी बट सैम बहादुर फॉर माय टीचर। लेकिन उसने मौका छोड़ दिया, सैम फॉर शॉर्ट कर दिया। ओके, तो इसके लिए कह रहा हूं, अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे तो लाइफ में इज वेरी इजी फॉर यू। ओके, प्रिपेयर्ड रहो। यस, नेक्स्ट पर्सन प्लीज, नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज। I have lived in Bihar since 2014. अब तो रहती नहीं, छोड़ दो ना, आप क्या बोलना, ये गलियां, ये चौबारा। Still that उससे बेहतर होता है ये, उससे बेहतर हॉस्टल वाली बात बोलती कि इस हॉस्टल में मैं पिछले 1 महीने से रह रही हूँ, ये ज्यादा अच्छा होता है। बिहार शरीफ को क्यों पकड़ के रखी हो? okay. I have lived in hostel um since September. वेरी गुड। नहीं, अराइव तो कंटिन्यू नहीं हो सकता। दोस्तों, अराइव एक एक्शन खत्म हो गया जिस समय आप आ गए। हाँ सर हाँ, सिंस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, लवली। सर यह आइडिया मेरे दिमाग में बहुत पहले से था। आई हैव मैं हैड मैं आ रहा हूँ आइडिया। जरा समझिए। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? हाँ, you have known me since 2015, yes, when you were a young boy. हाँ, you have been here since 7 p.m. Very good. कनेक्शन देख बन रहा है दिमाग में, ठीक है? आप खाली अच्छे इंग्लिश में नहीं होते जा रहे, आप सुंदर भी होते जा रहे हैं। पता नहीं मतलब ये मेरे बदलते हुए जज्बात है या क्या है, मुझे नहीं पता। ओके, बट यू लुक आई थिंक मोर हैंडसम टू मी नाउ। Perhaps it is the performance you are giving. मुझे ऐसा लगता है, वो कहते हैं ना, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। अच्छा करता है तो ना कोई काम, तो वो ऐसे भी अच्छा लगने लगता है, राइट? तो ये हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। यस सबा जी, प्लीज रिपीट। ये आइडिया मेरे दिमाग में बहुत पहले से था। I बहुत have had this idea in my mind फॉर अ लॉन्ग टाइम, for a long time. फॉर अ लॉन्ग टाइम। And sir, वेरी I गुड। want to know lucky sentences, sir. I didn't hear. He said, I have been here since 7 p.m. I have been here since 7 p.m. Okay. देखिए, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन मैं इसके लिए बहुत खुश इसलिए हूं क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे हैं, लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं बात को। I've been here Yes. since 7 p.m. Okay, good.
More people, more sentences. मनीषा, शादी के कितने साल हो गए बता दो लोगों को. मनीषा. Manisha. Are you all right, Manisha? Okay. Okay. Next Sir, person. I have had a rabbit as a pet for 1 month. Very good. Lovely. Lovely. Sir, I have a shawl. I have had a shawl since my grandmother dead. ओके इमराना, बहुत बढ़िया. इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं, ठीक है. नेचुरल हिंदी बनाते हैं. मेरे पास एक शॉल है. ये शॉल दादी के डेथ के समय से है मेरे पास. दादी ने ही दिया था मुझे. ये कहना चाह रही हैं क्या आप? Hmm, नहीं. little bit change. आप हिंदी में आ जाए, पहले हिंदी में आ जाए ताकि आप कनेक्ट तो करें बात से. क्या आप बोल रही हैं आप? मेरे पास एक शॉल है एंड मेरे पास एक शॉल है. मेरी नानी जब डेथ की थी उन्होंने मुझे दिया था. या उसी समय उनके से मरने के टाइम में. या इस समय से मेरे पास, उन्हें नहीं मुझे दिया था. ये तो वही तो या मैंने कैसे का अलग बोलना चाह रही हूँ. एकदम नेचुरल में बोला हिंदी में कि मेरे पास एक शॉल है और ये शॉल बोलना चाहेंगे आप? फिर दोबारा एक शॉल बोलेंगे? दोबारा No. एक शॉल बोलेंगे कि ये शॉल बोलेंगे? आप अपने आप से पूछें. या ये शॉल. तो फिर हिंदी में, इंग्लिश में भी चेंज होना चाहिए, राइट? वैसे ही चेंज. तो सीधी सी बात है. आई हैव अ शॉल and I have had this shawl with me since my grandmother's death. It was she who gave it to me. All right? Yeah, चाहे seriously बोले, she gave it to me. Okay? Okay. I don't have had any sweater or shawl since 2 years. Sorry, Kalpana, मैं थोड़ा confused. I would like to listen. Because, sir, in Pune, not too much I want you to winter. repeat the sentence, not to explain. Repeat the sentence. I don't have had any sweater or shawl since 2 ब्लंडर years. कल्पना जी. कल्पना जी, आपने डोंट कहाँ से लाया है इसमें? ये प्रेजेंट सिंपल थोड़ी है जो डोंट आएगा इसमें. I don't have. ये I कहाँ don't से आया? have. I डोंट don't कहाँ have से आया? sweater. पहले डोंट कहाँ से आया? प्रेजेंट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट में हैव होता है ना, हेल्पिंग वर्ब. तो आप हैवंट हैड बोलेंगे ना. आई हैवंट हैड दिस अ शॉल. आई हैवंट हैड ए शॉल. ओके. और ये चीज आपको बहुत गौर करना होगा कि आप चली गई Sir, एक्सप्लेनेशन पे. मेरी बात my सुनिए. mind was shifted. Previous class you teach with that time don't मेरी have. बात तो सुन लीजिए. आपकी गलतियां बड़ी बड़ी हैं. मैं फिर से बताता हूं. मैं कुछ लोगों को करेक्ट करता हूं उनके एटीट्यूड के लिए. मेरी ये प्यारी स्टूडेंट अपूर्वा को मैंने इतना बोला इस बारे में कि मुझे आपके हार्ड वर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं. कभी कंप्लेन ही नहीं कि आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे. मुझे कभी कहना ही नहीं कि आप तेज दिमाग के नहीं है. मुझे प्रॉब्लम किसी और जगह पे है जो मैं जान रहा हूं आपको रोक रहा है तेजी से सीखने से. जब मैंने आपसे कुछ भी पूछा तो आप उसको एक्सप्लेन क्यों करने लगी थी, ये समझाइए. क्या आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश आएगी तो मैं नहीं समझ पाऊंगा? ये पहले बताइए प्लीज. No, sir. I thought I said that. क्यों किया था आपने उसको? हाँ, मैंने एक्सप्लेन इसीलिए किया सर क्योंकि मैंने बोला 2 साल से मेरे पास ना स्वेटर है ना शॉल है. भाई तो भाई maybe that's why. तो यही तो बात है कि आप ना सामने वाले को अंडरएस्टिमेट कर रही हैं और इस चक्कर में अपनी गलतियां नहीं सुधार पा रही हैं. मुझे प्रॉब्लम सेंटेंस के मीनिंग से कभी नहीं होता कि मैं नहीं समझ पाऊंगा. मुझे प्रॉब्लम होता है आप सही बोल रही हैं कि नहीं. तो जब भी मैं कहूं पहले रिपीट कर लिया कीजिए. आप एक्सप्लेन करने लग गई. क्या मैं अंदाजा नहीं लगा सकता इस बारे में? अगर कोई मुझे कहे कि मेरे पास 2 साल से कोई स्वेटर नहीं है तो मैं नहीं पूछूंगा क्या वहां ठंड नहीं पड़ती? आपको लगता है मैं इतना बड़ा लोलू? मैं सिर्फ दिखता हूं वैसा, ठीक है? हूं नहीं सच में. ओके प्लीज. नहीं दिखते हैं सर वैसे. No, sir, you're looking very smart. Yeah, I know. Thank you. मैं तो मैं You're बोल रहा. handsome, sir. Okay. What's Lolo? Sir, our family Lallu makes lal means Lolu means Vanessa. Lelu, not Lelu, sir. That means I haven't had any sweater or shawl since 2 years. Don't लेके आई क्या? She don't No, sir, लेके I आई. haven't. I said I haven't, sir. हाँ, फिर से. I haven't had any shawls or sweaters for 2 years. Okay. Sir. यहाँ पर और भी अच्छा कर सकती हैं. I haven't bought भी बोल सकती हैं आप, right? I haven't bought.
Yes, since I came to Pune. I haven't bought any sweaters or shawls since I came to Pune. Very good. बहुत अच्छा जा रहा है दोस्तों. It's going great. Jishan. ये हुडी मेरे पास बचपन से है. I have had this hoodie since childhood. I don't believe it because you were not born this size. That's true. Just like a sentence. All right, lovely. Good. Sir, Okay. Hoodie की जगह doll बोलती ना, I would have loved that, you know. I've had this doll since my childhood. Okay. Next. मैं बोलूँ सर? Yes, Arish. सर मैं हिंदी बोलना चाहूंगा, मुझे कंफ्यूजन है. जैसे कि मैं बैंगलोर में 1.5 साल से काम कर रहा हूँ. तो आई हैव वर्कड इन बैंगलोर सिंस 2 years. और अगर मैं बोलना चाहता हूँ करता आ रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग For 2 years. I have 2 worked in years. Bangalore for 2 years. For 2 years. और एक और है सर, लाइक आई हैव बीन टू पटना और आई हैव गॉन टू पटना. बहुत कंफ्यूज करता है मुझे. तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई. Chill, chill, chill. बीन आया इसीलिए बोला मैंने. Chill. Relax. I will help you. Don't worry. Just when the time is right. Okay? Just hold on. इतने दिन बर्दाश्त किया, 10 मिनट और. Okay? Sir, you said same dialogue as Nana Patekar said. Which dialogue यार? तुम्हारे प्रॉब्लम से नहीं मतलब है भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा है. You are a हमारा you are a हमारा good अपना mimicry दर्द है artist. सर. You are a good mimicry artist, you know. You sounded like, you know, Nana Patekar. I wish I had the mimicry talent like you. Oh my goodness. You know, if I had two No, for talents, you know, a audition. little bit singing, a little bit mimicry talent, you know, I would have been such a entertaining teacher, you know, but And today, sir, Imrana look like a teacher. वो बेकार She होता है. wearing a वो goggles सिर्फ वाइफ के and लिए होता है. Okay, yeah, what did you say, Ravi? I said, sir, today Imrana is looking a teacher. Imrana is looking like a teacher. Yeah, Very today she is wearing a goggles and Imrana, where is she? Imrana's like a face is not grandmother. She's Imrana- like a grandmother. Imrana's face is not even visible. Oh, We oh, cannot see her. oh, yes. He said I'm looking like this. This is a class of good-looking I people. have had that problem, sir. Yes, that's all right. Yeah. Imran. That's all right. You know, I'm a lucky teacher. I have so many. She's showing her face such a long time. Okay. After a long time, or what are you saying? गलत बोल गए आप. क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत दिनों बाद उन्होंने अपना चेहरा दिखाया, ये बोलना चाह Yes, रहे हैं? sir. Yeah. तो अब बाद को since क्यों बोल रहे हो भाई? Since तो हम लोग बोले तब से. No, since I'm not, sir. Such a हाँ. long time. After such a long time. Yeah. She has shown her face on camera after such a long time. Okay. Yeah, exactly. Okay. It's good to see her smiling though. Now, or anybody else who has not given an example, please. Arish, I will help you. Don't worry. ये सबको समझ में आ गया? Yes. An action start. Sir, I have example. Yes, please. I have had a bad habit since then I started to sleep alone. I have had Bad habit. Bad habit. A bad habit. I've had a bad habit. Okay. Since I started When sleeping, I sleeping alone. since I started sleeping alone. I never turn off my fan in winter. Thank you. All right. All right. Okay. Next. I have had. भाई I have लोग had a इंग्लिश का terrible नाजायज फायदा मत sir. उठाओ. I got your point, sir. ये इंग्लिश का नाजायज फायदा मत उठाओ. गलत बात. Sir, और सोच के बोला लड़का. I, ओके. और sir, all right. don't laugh, right? Okay. Let's move on. That's not the only interpretation. There are other things as well. अपने दिमाग को सात्विक बनाओ दोस्तों. Okay. अच्छे डायरेक्शन में ले जाओ. Okay. जहन साफ करें आप लोग. Yes, exactly. Yes, my lord. Okay, guys. ये बात अभी और बता देता हूँ. अभी कहा I have been in a relationship for 4 months. ये भी समझ में आ रहा है दोस्तों?
आई हैव बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर 4 months, बिकॉज क्या हो रहा है, आई एम इन अ रिलेशनशिप, आई एम इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, हूँ, लेकिन 4 महीने से हूं, तो पता हो गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए होगा। तो आई हैव और आई एम, एम मतलब बी वर्ब ना, तो वो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ये बीन कहां से आ रहा है, आप लोग देखे थे, ये कहां से आया बीन? क्योंकि आई एम इन अ रिलेशनशिप, सिंपल सिंपल, बिना टाइम वगैरह डाले हुए, ठीक है, आई एम इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन ये बताना है कि 4 महीने से, तो आई हैव और एम का V3 यानी बी का V3, आई हैव बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर 4 months, फॉर 6 months, इजी, खत्म, ओके। और सुनिए, वो सुबह से गुस्सा है, ओके, तो ही इज एंग्री मतलब गुस्सा है, ही इज एंग्री मतलब गुस्सा है, बट वो सुबह से है, टाइम लगा दिया ना। ही हैज राइट एवरीबॉडी, ही हैज, और ही इज मतलब बी वर्ब था ना, तो फिर से ले आइए, ही हैज बीन एंग्री सिंस मॉर्निंग। आसान है दोस्तों, आसान है, ठीक है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से भूखे हैं हम। आई हैव बीन हंग्री, पता चल रहा है ना क्यों? क्योंकि आप आई एम हंग्री दिमाग में ला सकते हो ना, और जैसे ही एम आया तो बी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट में वो बीन बन जाएगा, थर्ड फॉर्म। आई हैव बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। सब लोग समझ में आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो फिर रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, ये पहला यूज क्लियर हो जाना चाहिए। एनीबॉडी हु hasn't understood? विकास बाबू, an example. Yes, sir. Sir, can I ask something? You just told that I have been hungry. What was the example, sir? I am little confused. Sorry, Vikas, I couldn't focus very hard. Could you just repeat? You have a question? What's your question? I have a question for the example that you gave just a moment ago. I have been hungry for, what was that? I just forgot. Can you repeat it सुबह again? से भूखा हूँ, I have been hungry since morning. Since morning. 4 घंटे से भूखा हूँ। अच्छा, 4 घंटे से भूखा कोई नहीं होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बोल दो 12 घंटे से भूखा हूँ। I have been hungry for 12 hours. No, sir. I think that, can I say in another bit, like I have been hungry whole day, for a whole day. हाँ, कहीं नहीं बोल सकते हैं। I've been hungry whole day, the whole day. I've been hungry the whole day. पूरे दिन भूखे हैं, राइट? कुछ नहीं खाया सुबह से। I've been hungry the whole day. Okay? I have been hungry all my life. Sir, I'm getting bean, sir. Yes. Let me explain my way how I'm getting it. Like Sanjeev joined after a long time today, your class. So I am saying Sanjeev has been absent for a long time. हाँ, बोल सकते हैं। Yes, exactly. Sanjeev, you've been absent for such a long time. Okay? Definitely. क्योंकि वो अभी जाकर उसकी एब्सेंस खत्म हुई है, आज आया है, राइट? हाँ, एक दिन बाद नहीं बोल पाएंगे ये चीज, अभी जस्ट आया तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसका एब्सेंट होना अब तक कंटिन्यू हो गया था। ओके, सो ही इज बीन एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। Sir, I have been teaching in school since 2006. आप तो थोड़ा Is it कंटिन्यूअस correct? करनी है प्रेजेंट परफेक्ट को, लेकिन आप कंटिन्यूअस कर सकती हैं इसमें, हालांकि उसको सिंपल भी रख सकती हैं। जब आप कहती हैं ना आई हैव बीन टीचिंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है, लेकिन कंटिन्यूअस है। आप School. मेरी बात सुन लीजिए सभा जी, आराम से आराम से। प्रेजेंट सिंपल है, आई टीच। I teach. प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा सभा जी? आई हैव टॉट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा सभा जी? आई टीच का प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव टॉट। आई हैव टॉट इन स्कूल फॉर 20 years। आप समझ रही हैं? बाद में एक और टेंस आएगा जो हम सिखाएंगे, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट लेटर। पहले ये तो समझ जाए हम लोग, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, लाइक दैट। तो गाइज, सिस्टमैटिकली इन ऑर्डर, ओके? I have done something for a long time since this. Manisha, you haven't said a sentence. Sir, I have been waiting for his call since morning. आपके सिर में दर्द है सुबह से? No, I have been waiting for his call since morning. अब देखिए इमराना, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने जो सीखा वो नहीं बोल रही हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सीखें मुझसे। गौर करिए दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, जो बोलते हैं वो सही होता है, लेकिन वो मैं जो सिखा रहा हूं वो नहीं है।
तो सीखना मतलब होता है सीखना ना। मैंने कहा आई वेट, है ना, प्रेजेंट सिंपल आई वेट, सब लोग समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा आई वेट का दोस्तों? I have waited. ओके, तो आई हैव वेटेड। अभी बाद में इसके आगे लेके जाएंगे हम आपको, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव वेटेड, ठीक है। आप आई हैव बीन वेटिंग को प्रेजेंट परफेक्ट मत बोलिए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। आई हैव वेटेड फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हालांकि आई हैव बीन वेटिंग 100% करेक्ट है इस जगह पे, बाद में बात करेंगे कैसे कुछ जगहों पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों के दोनों यूज हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी आवर फोकस शुड बी ऑन द प्रेजेंट परफेक्ट, नॉट द कंटिन्यूअस। ओके, सो गाइस, Sir, I have been here for 15 years. very good Manisha, you've been there for 15 years. Okay. In Delhi. I have had watching cricket match when I was 9. जाफरी आप गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। आप ले प्रेजेंट सिंपल में बोलिए, ठीक है। आई वॉच क्रिकेट मैच, ठीक है। आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए, आई हैव वॉच्ड, ठीक है। और मैं एक काम करता हूं, इन ऐसे सेंटेंस जो मैंने अभी सिखाए हैं इसमें से कई को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोला जा सकता है। जैसे मैंने कहा था आई हैव लिव्ड इन बिहार शरीफ सिंस चाइल्डहुड, आई हैव लिव्ड बोला था मैंने, राइट? यही है ना प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोला जा सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हालांकि ये मुझे पढ़ाना है बाद में यूनिट 11 में, रिमेंबर। लेकिन चूंकि आप लोग एग्जाम्पल लेके आ रहे हो तो मैं सामने से रख दे रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन बिहार शरीफ सिंस माई चाइल्डहुड भी सही है। तो पॉइंट ये है कि जो आप कंफर्टेबल हैं वो रहिए, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग कई चीजें पहले से जानते रहते हैं, हाँ या ना? आई एम नॉट योर फर्स्ट टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो अभी जो मैं सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। व्हाट आई एम टीचिंग यू, प्रेजेंट परफेक्ट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट हैज कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट। वो सबसे ज्यादा एग्जांपल दीजिए, ध्यान दीजिए उस पर। मेरे पास ये तब से है, मैं आपको तब से जानता हूं, ये वाले सेंटेंसेस। मैं 2 साल से शादीशुदा हूं, कैसे बोलेंगे? आई एम मैरिड, नहीं, आई एम मैरिड प्रेजेंट सिंपल हो जाता है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट बना देना चाहिए, बना दीजिए। You have been married since 2007. Sir, I have been your student for 18 years. Like that, okay, on and off, okay. नहीं तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी कि 18 साल में आपने ये सिखाया बच्चे को, ठीक है। तो ये मामला गड़बड़ा जाएगा। Okay. Sir, in class 10, in 10th rule, we know that we use these scenes for in present perfect continuous. वो हटा देना, बचपन वाली पढ़ाई हटा देना, वो सब अधूरा पढ़ाई होता है, ठीक है। सिविल That's rules. Huh? Rules can't be wrong, na? Good fortune. No. I said adhura. I didn't say wrong. I said adhura. Remember? Okay? So you don't want hamari adhuri kahani. You want the complete story. Okay? And that's what we are getting here. Okay? मैंने आपको कहा कोई काम पास्ट में शुरू हुआ अब तक चलाया। प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर, एक यूज क्लियर हो चुका है। अब सुनो दूसरा यूज सुनो, प्रेजेंट परफेक्ट। Okay, guys, write some sentences. प्रैक्टिस करेंगे आप ये। मैं वर्ब्स बता देता हूं, इन्हीं वर्ब्स को ज्यादा यूज करना। ओके, नो, KNOW, नो, बी, हैव, ओके, नो, हैव, बी, इन 3 वर्ब्स को यूज करके आप जितने तरह के सेंटेंस लिखें, ऑब्जेक्ट बदल के कर लेना, सब्जेक्ट बदल देना, वर्ब 3 को रखना भी सिर्फ, ठीक है। और यही वाला सिंस, फॉर करते रहना, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है। ओके, मैं आपको बस एक सप्ताह जानता हूँ, पैसे कैसे दे सकता हूँ 1 लाख रुपए आपको उधार। मैं आपको 1 सप्ताह से तो जानता हूँ 1 लाख रुपए कैसे उधार दे दूं, कैसे बोलेंगे? आई हैव नोन यू ओनली फॉर अ वीक। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि मैंने 3 वर्ब लिखा है तो बातें नहीं हो सकती, 1000 बातें हो सकती है। मैं आपको 1 सप्ताह जानता हूँ भाई, कैसे 1 लाख रुपए दे दूं? आई हैव नोन यू ओनली फॉर अ वीक, आई कांट लेंड यू 1 लाख रुपीज। ओके, I haven't known you for long enough. I haven't known you for long enough. I can't trust you. Okay. Moving on. अब दूसरा सुनो जो पूछा था प्यारे आरिश ने। Okay, let's listen. दोस्तों, you have experiences in life. मैंने कहा, मैंने एक फोटो दिखाई आपको
और उसके बाद या कुछ बताया शेर के बारे में ऐसा वैसा, आपने कहा हम शेर देखें, बेवकूफ मत बनाइए हमको। आपने कहा हम शेर देखें, बेवकूफ मत बनाइए, ठीक है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम शेर देखें ऐसे कि मेरे पास अनुभव है शेर देखने का, राइट? यही बताना चाह रहे हैं ना, मेरे पास अनुभव है, आप मुझे इस बात से बेवकूफ नहीं बना सकते। तो जब भी आपको अनुभव बताने, लाइफ के अनुभव, लाइफ एक्सपीरियंसेस, यूज द प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने देखा है, आई हैव सीन गोस्ट। आरिश ज्यादा नहीं घबराना, ओके? बाथरूम बगल में है ना, देख ले पहले, ओके? ये and because sometimes accidents happen when people are more scared, very scared. So yeah, I'm anyways. alone on the roof, sir, right now. No one is here. Okay, let me talk about Bhoot, and after Bhoot I will talk about Jinn. भूत नहीं Wait ना, अभी रुको ना, अभी डरा देता हूँ उसको। भूत से नहीं डरता, जिन से डर जाता है। Okay. 12, sir. 12. Arish, विदाउट Arish, मेकअप डाल Yes, Arish, sir. I have seen a jinn. I have seen a jinn. Mm, He looks I very believe like, it, sir. he looks very like me. Okay. Mhm. All right. तो दोस्तों आप I अपने don't अनुभव believe बताइए। in ghosts, but I do believe in devils and jinns. Yeah, that's why I said थोड़ी देर बाद तुम्हें लेके आया ना डराने वाली Sir, बात। you are not look like a jinn. You are look like a jinnat. I think कितना jinnat मत is the बोलेगा? plural of jinn. Jinnat is the plural of jinn. Jinnat Yes, is you're a right. different thing. Yes, Jinnat sir. is the plural. Okay. Okay. Hajrat, Hajrat, Hajrat. Okay, that is plural. People. Okay. Okay. Coming back to this. हम रोड पे जोर जोर से रोए हैं। ओके, हम रोड पे जोर जोर से रोए हैं। आई हैव क्राइड लाउडली ऑन द रोड, ऑन द स्ट्रीट, ओके, और इन द स्ट्रीट भी बोल सकते हैं, नो इश्यूज। तो अब मुझे बताएं कि आप लोग इस तरह के अनुभव कुछ भी बताइए अपने लाइफ के, क्या क्या करा है आपने, उठ पटांग, अच्छा बुरा। ओके, गो अहेड। आई हैव स्टोलन guavas from the cart. I have vomited badly on a bus once. ओके, ऑलराइट। आप गौर करना, अपने अनुभव बता रहे हो आप लोग। कम ऑन गाइस, फीलिंग रखना दिमाग में, यू आर जस्ट टेलिंग मी योर एक्सपीरियंसेस। गो अहेड, क्या करा है आपने? यस। I have stolen tips script from your class. Oh my goodness, Kalpana. Oh my goodness. That was her level of confidence. She did not trust herself that she could write. She had to steal the tape audio script. Can you believe it? At that time, sir, you kept written tips script in I office. know. Yeah, printed ones. I know. Yes, sir. Beautiful. I have stolen. But last in the last, sir, not the starting. I can't believe it. Oh my goodness. Me and my friend both, sir. Oh, that Both girl. are included. Yes, Oh. sir, Savita. Oh my goodness. Okay, fine. You'll have to pay a compensation for that now that you have confessed. Okay. Now that you have confessed. आगे बताओ, और बताओ, जल्दी जल्दी। Experiences, quickly. We have only a few minutes left. Experiences. आरिश, अब तुम अपना एक्सपीरियंस बता दो कि हम न्यूयॉर्क, हम दिल्ली गए हैं, हम लुधियाना नहीं गए हैं। ओके, और ध्यान देना दोस्तों, इसमें ये एक्सपीरियंस बताने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आई हैव बीन टू दिल्ली, आई हैवंट बीन टू लुधियाना। और इसको एकदम एक्सेप्शन मान के चलना, इस बीन को यहाँ पे, ठीक है? कि बीन क्यों आया, गॉन क्यों नहीं आया, इसको भी थोड़ी देर के लिए एक्सेप्शन मान के चलो, और कुछ मत कहो। I have been to Delhi, but I haven't been to Ludhiana. Okay? All right, guys? You haven't been to Kolkata. I've been to Kolkata, but I haven't been to Mumbai. You haven't been to Delhi, but I haven't been to Mumbai. I've been to Delhi. I've been to Kolkata as well. I've never been to Mumbai. Come on, guys. Give me examples quickly. I have eaten. I have been Delhi, Amritsar, many cities. You have been to Amritsar. You have been to Amritsar. You have been to Delhi. Two is important. T-O-2. Okay. To Amritsar, Delhi, Jaipur, Pune, and a lot. I don't know more. Yeah. I have been to. I didn't remember. I have been to Singapore and Malaysia, sir.
You have been to Singapore and Malaysia. Kalpana has been Yes, to sir. Malaysia. And you? I have been to Rajgir. You have been to Rajgir for? The match. Okay, don't say this. बस आप बोलिएगा I've been to Rajgir. Okay? हाँ. All right. अपने अनुभव बता रहे हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा। आप कोई बात नहीं बता रहे, सिर्फ अनुभव बता रहे हैं। पास्ट की कोई I घटना नहीं have बता रहे। been to Bhopal. हाँ, आप ये ध्यान रखना इस बात का कि आप ये नहीं बता रहे कि आपने पास्ट में कोई एक्सपीरियंस किया। आपने अपने खाली एक्सपीरियंस बतानी है, पास्ट की कोई घटना नहीं बता रहे। मैं जो बोल रहा हूं उसको गौर करो। आप बोलते समय हिंदी में भी सोचोगे, ठीक है, और हिंदी भी बोलोगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सिमरन, व्हाट हैपेंड सिमरन? Nothing, sir. गिव मी सम एग्जांपल्स, क्या क्या किया है तुमने? लड़के को थप्पड़ मारा रोड पे? No, sir. हाँ तो बोलो, आई हैव नेवर I स्लैप्ड अ बॉय haven't. I have never slapped a boy ऑन द रोड। on the road. It means you want to slap. But Maybe, I have. but you have slapped a boy in the class. No. But I have abused a boy on the road. Okay. Which word did you use to abuse him? It's secret, sir. Don't ask, sir. You're getting personal. Okay. Those taboo words. BHDK, sir. Mother sister words. BHDK. Oh my goodness. It's so simple. Oh my पूरा goodness. बोल दे भाई. What did you say, Kusi? Zafri, पूरा बोल दे class में. Seriously. These are very बोल normal. ही दिया sir. BK. How much respect for the teacher? पूरा बोल दे. पूरा बोल ही दिया उसको. Sir, maybe she said, don't you have mother and sister? Ah, okay. Did he not say, but I don't have a girlfriend? Nah. She is a I mean, if this is not very smart, to say you don't you have a sister? Don't you have mom? Oh, I have mom, I have sister, but I don't have a girlfriend. But I don't use this line. And sir, Pankori is the baddie. When she started abusing it is like hell. Really? She's a baddie? Yeah. Obviously. Now she's gonna have learned from her. kill you for saying this to me because I'm her chachu, okay? So she didn't want me to know that she's a baddie, and you told me. Okay. No, I don't think she would mind. Okay, ask her. Tell her that you told me. Let's see how she reacts. Okay. You have locked up your teacher in the bathroom. Okay. Guys, सब तरह के अनुभव हैं. He has locked up his teacher. मत ऐड करिएगा. When I was in my school, बिल्कुल मत ऐड करिएगा. दोस्तों, जब आप अपने experiences बताते हैं, you don't mention the time. तभी ये present perfect है. अगर आपने time mention किया, then it will be past simple. गौर से सुनिएगा. If you mention the time, it automatically changes to past simple. ध्यान रखिएगा. You can't mention the time. आप नहीं कह सकते I've been to Delhi last year, I've been to Delhi in 2015. नहीं कह सकते आप ऐसा. ओके, आप बस इतना बोल सकते हैं I've been to Delhi. अब बोलो, इससे हिंदी से कौन सा मैच होता है? I've been to Delhi. हिंदी करो. दिल्ली गए हैं. बहुत बढ़िया, मुझे मस्त लगा तुम्हारा बोलने का अंदाज. दिल्ली गए हैं, बस इतना ही, ऐसे ही बोलना होगा. ठीक है. I've eaten crabs. केकड़ा खाएं. हमेशा केकड़ा खाए हैं. Alright. Okay. और बताओ. Sir, I guess you like something. Guys, ये second use है present perfect का, जिसमें आप अपने अनुभव बताते हैं, but you don't mention the time. The moment you mention the time, it will change to past simple. Past. क्या आसान है? इतना याद रखना आसान है? Sir, I have known you since 2012. हाँ सही है. पहला यूज था ये. मैंने बताया. Are we ready for the third? Harish, what are you doing? Talking to who? No, I want to say a sentence. But you're talking to yourself, not to us. You're muttering. Yeah, sir. I'm muted. Okay. Do I? Okay. अच्छा, कैसे कर दिया मैंने? Okay. All right. अभी क्लियर करते हैं कि there is a third use of the present perfect. Okay? And the third use, okay? Please understand. This is the most confusing one and this is the most common one. ये आपको सबसे ज्यादा जरूरत भी पड़ती है. आपने कोई काम कर दिया है, बाकी नहीं है. Okay?
बाकी नहीं है, काम हो गया है, Sir, काम। ऑलराइट, यस सिमरन। my roommate is asking how sir teached you. What should I reply? Like she is asking, do you write notes? Yes, I'm making mental notes. Yeah. I have given her the books to see that how we study. She's I like, you know. are speaking in the That is the class. reason why my class is We, not like, very successful, like hundreds yeah. of 200 students waiting. There is a reason, because people don't even fathom, understand what I'm doing here, So, She was saying that you are in a class, like you are speaking, and when we used to study, like we had to make notes. So how are you studying? Then I said that if we don't even like speak in class, how would we speak to others? She was like, yeah. it's everybody has their own No, opinion it's a about my class. common concern, sir. Like, how sir teached you? Like, he give you notes, or what he teached you, or what type, how the classes is? I got this Going one on. question. I don't know how to reply that question. Like, I always tell her it's not like that. It's like interactive classes. You will learn everything, but I don't know. They have never come across to such type of teachers. That's why they don't know how it is, like My how it's work. my biggest problem is this, कि मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, बिकॉज ये मेथड वर्क करता है, इट टेक्स टाइम, राइट? और कुछ लोग चाहते हैं 2-4 महीने में सब कुछ हो जाए। इट्स नॉट गोना हैपन, नेवर। तो भाई इतना जान लो, ठीक है? Everybody has their own opinion. Some people say I focus too much on grammar. Some people say I don't teach grammar. Some people say I don't give people chance to speak. Some people say students You taught everything, sir, but we cannot recognize all the time, but we can learn anything. Thank you. All right, चलिए जल्दी से बात खत्म। काम हो गया है। जैसे मम्मी घर आई, अरे बाथरूम धो दिया था? हाँ धो दिए हैं। हाँ धो दिए हैं। हाँ धो दिए हैं। ऑलराइट, बात समझ आई? यह खाना खा लिए हैं। सब्जी काट दिए हैं। सब्जी काट दिए, जाकर छौंक दो। ओके, भुंजिया भूंज लिया। हाँ, और भी सोचो क्या क्या काम कर दिए हैं। शर्ट आयरन कर दिए हैं, पहन लेना। ओके, शर्ट आयरन कर दिए हैं। तो ये तीसरा है, वो दोनों जैसा नहीं है, बिल्कुल याद रखना। ये तीसरा है, दिस इज द थर्ड वन। दिस इज द थर्ड वन गाइस, एंड द प्रेजेंट परफेक्ट हैज मेनली 3 यूसेस। मैंने पहला बता दिया, पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ, अब तक चला है, प्रेजेंट तक। आपने एग्जांपल्स देख लिया, आई हैव नोन यू, आई हैव हैड दिस शर्ट एंड स्टफ लाइक दैट। सेकंड, एक्सपीरियंसेस, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। आई हैव डेटेड 2 गर्ल्स एट द सेम टाइम, ठीक है, मतलब ये एक्सपीरियंस है मेरे पास। ऑलराइट, उसके बाद जो थप्पड़ पड़ा उसका भी एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन स्लैप्ड एज वेल। ओके, तो आगे सुनिएगा। काम खत्म हो गया है। थर्ड, काम खत्म हो गया है। जैसे मैं समझ गया हूं क्यों परेशान कर रहे हैं, हम समझ गए, यानी समझने का काम हो गया है, हम समझ गए हैं। ये एक्सपीरियंस नहीं बता रहे आप एक्सपीरियंस नहीं बता रहे, आप बोल रहे हैं टास्क कंप्लीटेड, मिशन अकम्प्लिश्ड, राइट? ठीक है, एग्जैक्टली। चिकन बना दिए हैं, रोटी तो बना लेना। ऑलराइट, ये वाला सेंटेंस है। तो आप थर्ड यूज पे भी थोड़ा सोचना, एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके गाइस, द प्रेजेंट परफेक्ट, 3 different uses. Work hard everyone, I'll see you all tomorrow. Good night. Bye sir, good night. Bye, sir. Good night. Bye sir.